So let's start. I'm sharing my screen with you. So if someone has joined in between, please let me know, okay? So comparing currency values. So first we have to understand what is the meaning of currency. The first thing is currency is a medium of exchange for goods and services. In short, it is a money in the paper or in the form of paper or coins, usually issued by a government and generally accepted at its face value. Excuse me, ma'am. Yes. मैम Ma'am, आज which हमें chapter नोटबुक में we are कराना है कि doing? बुक में? No, beta, you are not doing this in the notebook. ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, and then worksheet you can paste it in your notebook. ओके मैम. Yep. Ma'am, which chapter we are doing? We are not doing any new chapter. We are just doing one activity, which is an ISA activity. As I told you, British Council. Ma'am, you send it on Google Classroom also. Yes, I have sent it yesterday. So इस बात का मैम yes. मैम हम इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं? Yes, you can take out the printout or you can only write down the answers in your notebook and click the picture and send. नो मैम आई प्रिंट आउट. Yeah, fine. So let's start it. So I'm just talking about the currencies. Currencies is the primary medium of exchange in the modern world, having long ago replaced bartering as a means of गुड trading. मॉर्निंग मैम. Good morning. Trading goods and services. Anyone know the meaning of bartering system? Ma'am, it means like the money exchange cold drink is 95 and you're giving him 100 rupees. So it means it will cut 90, he will or she will cut 95 rupees from the 100 and will give you 5 coins. Anyone else who know the meaning of barter system? मैम किसी चीज के बदले में कोई और चीज लेना. Yes, first switch on your camera. Amrit, just settle down. Yes. Manasvi, you want to say something? Mama, I got silent. Okay, fine. So please mute yourself. Now, yeah, it is true that bartering means hota hai ki when you are exchanging the things with each other. The best example of this I have given in the another class also. Suppose you are having two pencils and on that day you forgot to take your eraser to school and you want to take an eraser from your friend and your friend is very smart. He was saying ki, no, I will not give you the eraser. If you want my eraser, I want a pencil in exchange. So what you are doing? You are giving one pencil to him, which is of the rupees 10, and you are taking an eraser which is of rupees 2 from him. होता है ऐसा कभी हुआ है तुम्हें आपके साथ? So you are just exchanging the things. You are not giving the money to that person. That person is not giving you the money. You are Arya, sit straight, beta. You okay? Good morning to everyone. The students who are still writing here. Yes. So you are exchanging the thing. This is called the barter system. So in the yes. Ma'am, do we have to write anything? No, you are not supposed to write anything. You just understand the things. And Okay, I ma'am. just don't write. Okay, you just look at the screen and we can have a discussion for this. So I'm just talking about the currencies. Currencies are the basic way of exchanging goods and services. So चैट बॉक्स को भी छोड़ दो बंद हो गया. ये नहीं मेरा एक चैट बॉक्स. yes, sorry for disturbance. Yeah. So I'm just talking about in the earlier time when we are not the money was involved, people are used to exchange the things. But वहाँ पे फिर एक problem होती थी. क्या problem होती थी? Suppose some people wants to take a one glass of milk and other people is not having the things. किसी के पास में बहुत बड़ी चीज है, सारे utensils हैं, clothes हैं. So it is difficult to exchange the things, right? अब every time you are not having the same value things ना, हो सकता है कि उसके पास कोई वैल्यूबल चीज हो और उसको कोई कम चीज की जरूरत हो. तो दिस इज द डिफिकल्ट वे ऑफ एक्सचेंजिंग द थिंग्स. अभी भी होता है बार्टर सिस्टम. हैव यू हर्ड कि आपके घर के आसपास समटाइम्स
some ladies are coming and they are taking your old clothes. आपसे वो पुराने कपड़े लेते हैं, they give you the utensils. It happens. Yes, ma'am, वो हमारे घर आती है. So this is called also a barter system. You are not giving money to her, you are just giving your old clothes, and that she is giving you the utensils in exchange of that. But इसमें क्या problem है? Suppose आपकी कोई dress है and you brought it of ₹1,000, and she is giving you a spoon of ₹10. Because you need that, so you are just exchanging the things. Hitanshi, are you okay? Yes, ma'am, I am feeling well. So your mama is giving you food. Yes, ma'am. Ma'am, I am suffering from fever, na? Okay, just take care of yourself, okay? And next time just switch off your camera if you're eating something. Ma'am, I have switched off my camera. But I can see you. And everyone can see you. Okay, just so we are just talking about the currency. So currencies is come in picture where we can give the things and take the things in exchange of it. So in this PPT, we are just study about the 4 countries. These countries are United Kingdom, India, Egypt, and Australia. Okay, we are just studying about these 4 countries and their currencies. India. As everyone knows, the India rupee is the official currency of India. The rupee is subdivided into 100 paise, and its singular form is paisa. The Indian rupee symbol is R. जो हिंदी वर्णमाला का र अक्षर होता है, उससे आपका ये रुपीस का सिंबल आया है. And which picture is on the Indian currencies? Can you see? Mahatma Gandhi ji. Yes. Mahatma Gandhi. Yes, and he is also called the father of the nation. Next is the United Kingdom, which is you call it UK. The official currency of the United Kingdom is the British Pound, which is used stand for the GBP, Great British Pound. The pound is divided into 100 pence. The singular of pence is penny. Another name used for the pound is sterling. The symbol for the pound is, as you can see, this is the symbol which is we are using for symbol of the pound. And which picture is there on in British pound? Can you see? It is a picture of a queen. Okay, the next one is Egypt. Okay, I think Egypt is not having any, they are having some symbols over it. And this is also the, अगर आप eagle का एक symbol देख रहे हो, this symbol is also on their flag. The official. breaking. Okay, just mute yourself. I just try to. शायद network का कोई issue रहेगा बेटा. The official currency of Egypt is Egyptian pound. See, this is also a pound. So what is the difference between the Egyptian pound and the British pound? Whenever you are writing the Egyptian pound, you just write a E. Yes? Mama, can leave and rejoin? Yes, you can. The symbol used for the EGP is E pound. The Egyptian pound is subdivided into smaller currency denomination known as Quraysh or millimers or pistaras. One Egyptian pound equals to 100 Quraysh or 1000 milliams. Now the what is the yes? मैम ये जो आप एक्टिविटी करवा रहे हो ये भेजना भी है हमें क्लासरूम में? Yes बेटा, गूगल क्लासरूम से इससे रिलेटेड एक वर्कशीट है, आप उसमें 10 क्वेश्चंस हैं. मैम आई हैव दुबई करेंसी. ओके गुड. बिकॉज जस्ट अभी देखते हैं आपके पास है, अभी हैंड में है वो. मैम मेरे पापा के पास है, मेरे पापा ऑफिस गए हुए हैं. मैम हम लोग दुबई गए हुए हैं. ओके गुड. सो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखा देना. द ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. Within Australia, it is almost always abbreviated with the dollar sign. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर और कहाँ की करेंसी डॉलर है? एनी आइडिया?
मैम America. United States of America. अब suppose करो yes, अब अमेरिका की करेंसी भी हमारी डॉलर है and ऑस्ट्रेलिया करेंसी is also a dollar. So if it happens, if they are signing it as a dollar symbol, then there is a confusion. Which is the value? It is an Australian dollar or it is an American dollar. So what they are doing, they just put a A. As you can see, A they are putting in front of the dollar symbol. So this is known as the Australian dollar. It is subdivided into 100 cents. Now this is the comparison which you can see. The first one is the name of a country which is given. It is India. Currency is Indian rupees. Symbol is this. Denomination means होता है आपका जो उसके number of notes or coins you can find in the market. As you can see, notes are 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000. And coins जो आपको Indian currencies में you can find it. It is 50 पैसे, 20 पैसे, 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees. Now, what is the issued bank? Achha, every country is having one central bank or one government bank or one issued bank. उस बैंक का क्या काम होता है? It is just controlling the financial condition of that country. कितना amount आपका market में आएगा, कितनी currencies print करनी है, जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज है वो किस तरह से आपका मैनेज करेगा. तो ये सारे उसके लिए एजेंसीज होती हैं. एजेंसीज मींस गवर्नमेंट की ही एक गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, हायर करती है. एंड इन इंडिया इट इज कॉल्ड द RBI और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हैव यू हर्ड दिस वर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? Yes, ma'am. Yes, so the Reserve Bank of India is not a bank. वो आपका कोई बैंक Yes, नहीं. Yes, ऐसा No, नहीं. ma'am. Yes, आप वहां गए और आप अपने अपना अकाउंट खुलवा लिया. No, it is not a bank. It is the government-run agencies which is taking care of all the money and financial matter. ठीक है, किस कंट्री से कितना आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सब आपका जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखती है. और जैसे आपका प्रिंटिंग होती है मनी की, आपको पता है ना आपके नोट्स जो होते हैं वो कहीं प्रिंट होते हैं. तो RBI is not printing the money but he is instructed. वो इंस्ट्रक्ट करती है कि कितना मनी आपको प्रिंट करना है. Every country is having that kind of bank. Now the next one is United Kingdom. Currency is British pound. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, what is the meaning of value in comparison of Indian rupees? Yes, I'm just explaining you better. Just mute yourself. पहले मैं इसको एक बार बता देती हूँ, फिर मैं आपको explain करती हूँ कि what is the meaning of this. British pound, as I told you, it is the pound. मैम इसकी वर्कशीट निकाल के क्या करना है? मैम इसे हमें I'm not able to hear you. बेटा इसको नोट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है. There is no need of. मैम आया जैसे हमें वर्कशीट में मिलेगी मैम. हाँ अपने नोटबुक में चिपकाना है. हाँ जी बेटा, वर्कशीट को नोटबुक में पेस्ट कर लेना. तो the मैम yes. ओके मैम. Okay. I have also Dubai coins. Okay, it's fine. So it is the British pound is having the denomination of 1, 5, 10, 20, 50. Coins are 1, 2, 5, 10, 20 and 50 penny. And it is the 1 and 2 pounds. Bank of England is the issued bank. The next one is the Egyptian. What? I didn't get you. Egyptian pound is 1, 5, 10, 20, 50, 100 and 200. Coins are 5, 10, 20, 25 and 50 pistaras and it is 1 Egyptian pound. The next one is Australia. Dollars में होता है 1, 2, 5, 10, 20, 50, $100 notes you can find in the market. Coins are 1, 2, 5, 10, 20 and 50 cents, which you call it cents. So as you can see, in Indian rupees, we are having the subdivision of paisa. India में क्या होता है? It is a paisa. In United Kingdom, it is penny. In Egyptian, it is pistara. And in Australia, it is cents. Yeah.
यहाँ पे आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड होगा, यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इजिप्ट है, इधर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इन इंडिया इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Okay, now I'm just telling you. My father has rupees 5 cents from Canada. Okay, good. So value in comparison of Indian rupees. Now I'm explaining you कि why it is the value of Indian rupees. मतलब what does it mean? अगर आप 1 pound, ठीक है, यूके पाउंड की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे. If you bring 1 pound and you are exchanging in India, you will get rupees 95. How much amount you will get? 95 rupees. If you are exchanging 1 Egyptian pound, you will get rupees 4, approximately 5 rupees. In Australia, it is rupees 52. अच्छा, every country value is different. Okay? जरूरी नहीं है कि आपकी जो कंट्रीज की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी. हर कंट्री की अपनी एक अलग वैल्यू होती है. Now let's discuss about the international market. अच्छा, can you please tell me कि why the any idea कि हर कंट्री की वैल्यू अलग अलग क्यों है? आपको पता है अमेरिकन डॉलर की वैल्यू कितनी है? मैम क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज हैं. ओके, तो हु विल डिसाइड कौन करता है कि इसकी वैल्यू 100 रुपीज होगी, इसकी वैल्यू 4 रुपीज है, इसकी 20 है? कौन डिसाइड करता है? आरबीआई तो सिर्फ इंडिया का कंट्रोल कर सकती है ना, वो पूरे वर्ल्ड का थोड़ा ना कंट्रोल कर सकती है. I can see the few students are eating. Please switch off your cameras if you want to eat now. Riddhi, Abhinav. वैसे तो आपको क्लास के बीच में नहीं खाना चाहिए, but if you are very hungry and you want to eat, please switch off your cameras because it doesn't look good. Okay? Financial institute. Yes, financial institute. अच्छा, have you heard about the news? आप कभी न्यूज देखते हो? Yes, ma'am. Okay. जो लोग मैं रोज देखती हूँ. और न्यूज में क्या देखती हो रिद्धि? रोज तो कुछ आता भी नहीं है न्यूज में. मैं पापा देखती हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही देखती रहती हूँ, सुनती नहीं हूँ कुछ. अच्छा चलो, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. अगर इफ यू एवर हर्ड दैट in the market, in the news it is saying कि today's due to the oil price, क्योंकि हमारा जो होल ट्रेड होता है वर्ल्ड में, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या होता है जो अभी जिसकी वजह से सारी इकोनॉमी रन करती है, इट इज ऑयल. ठीक है, ऑयल किसके पास है? मिडल ईस्ट, जो गल्फ कंट्रीज है, दे आर सेलिंग द ऑयल. ओके, आई कैन सी मनस्वी showing me something. Yes, Manasvi? So you are showing me the penny or cent? Okay, good. Cent. I hope everyone is having few corrections with them. Okay, so I'm just explaining you about कि जो आपका whole world का जो trade चलता है वो आपका चलता है oil के ऊपर based होता है. And oil is coming from the Middle East countries like Saudi, Qatar, Bahrain, Oman. They are selling the oil. So they are selling in the they are trading in the dollars. वो करते हैं, वो किस में ट्रेड करते हैं? डॉलर्स में करते हैं. Why dollar only? American dollar? Because America is very powerful country. Everyone know it is called the superpower. So it is dominating the world economy. And yes. United Kingdom is more powerful than Australia. Yes. So अब होता क्या है मार्केट में, अगर सपोज करो जब ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा तो आपके डॉलर का प्राइस भी इंक्रीज होगा वर्ल्ड इकोनॉमी में. जब ऑयल का प्राइस डाउन होगा तो आपका इसका डॉलर का प्राइस भी डाउन होगा. बट होता नहीं, क्योंकि एवरी कंट्री, कोई भी छोटी बड़ी जितनी भी कंट्रीज है, एवरी कंट्री वांट्स टू टेक द ऑयल. और ऑयल हमें कहाँ से मिल रहा है? सऊदी से. या वी हैव टू टेक इट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स. तो डॉलर्स का प्राइस इसलिए वो आपका बढ़ता है. इट इज 74, आई थिंक राइट नाउ इट इज 74 और 75 रुपीज इक्वल्स टू $1. तो ये सारा, अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने भी आपको बताया यहाँ पे
कि सबकी वैल्यूज अलग है। ब्रिटिश पाउंड जो है वो 95 रुपीज का है। इजिप्ट का जो पाउंड इट इज 5 रुपीज उसकी इंडियन वैल्यू है। तो ऐसा नहीं कि सभी जगह इंडिया की वैल्यू की मनी कम है। अगर आप जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, कौन कौन से, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अगर आप वहां जाओगे तो आपकी इंडियन रुपीज की वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, विच इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? नेपाल मैम। हम नेपाल। रिचेस्ट कंट्री बोला बेटा? नेपाल मैम यूनाइटेड किंगडम। Okay, मैम some यूएसए। no, USA is not the richest country. It is the Qatar. It is Qatar. Which is, yeah, it is Qatar, which is yeah, South. United Arab Emirates, UAE is also a richest, but it is not the one of the topmost. Topmost is, I think, it is a Qatar, which is the Middle East country, and it is the selling the oils in the market. So definitely वो sale करते हैं, and they are having oil which is called the liquid gold also. मैम अरब। Yes, it is Qatar. QATAR. You can check it online also. Qatar is the one of the richest country. Yes. So I think now it is clear to everyone कि why we are having the different values, different currencies values. और आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में रहते हो, तो उस चीज पे भी इफेक्ट पड़ता है। सपोज इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, देन यू इफ यू आर कंपेयरिंग विद द अदर कंट्रीज, मे बी ऑस्ट्रेलिया वालों को $1 कम लग रहे हैं, बट अगर वो इंडिया में आएंगे तो दे फील रिच। व्हाई? बिकॉज उनका $1 इक्वल्स टू कितने हो गया? 52 रुपीज हो गया, राइट? इसी तरह से आपकी हर करेंसीज का अपना ही। यस मैम मैं रोज देखती रहती हूँ गूगल में ऑस्ट्रेलिया का। तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है क्या? नो मैम, मैं देखती हूँ सिर्फ। तो व्हाई सो मच फैसिनेशन अबाउट ऑस्ट्रेलिया? समथिंग स्पेशल? नो, चलो कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया इतना पसंद है क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर अच्छी अच्छी जॉब में जाते हैं। अच्छा, घूमने तो बहुत जगह जाते हैं। सिंगापुर भी जाते हैं लोग, हांगकांग भी जाते हैं। अभी इट इज ड्यू टू द कोरोना टाइम, नो वन इज गोइंग आउटसाइड, नो फ्लाइट्स आर देयर, ओनली द फ्यू फ्लाइट्स आर रनिंग। नवंबर में आई गो, 18 नवंबर। You already visited or you want to go? Ma'am, I go to my nanny house in Muzaffarpur. Okay. Yeah, okay, fine, good. You can move here and there, but just take care of yourself. Okay, so beta, there is a worksheet which is I already uploaded. You have to do that worksheet and send it to me. Okay. In the next class, yes, in the next class we will do the. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I have iPad with me, so I don't have any printer. So can I do with the pen? Yes, you can, beta. It is a good choice also. आपको उसमें पेज भी बचेगा and you can save the time also. I'm taking your quick attendance. फिर आज का सेशन इतना ही रखते हैं। न्यू चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आयशा मैम मल्टीप्लाई एंड फैक्टर। यस बेटा, मल्टीपल्स एंड फैक्टर। अंबिका, अमृत, अनुभव, अमृत प्रेजेंट मैम। अर्णव, अर्श प्रेजेंट मैम। अर्शदीप प्रेजेंट मैम। आर्या, अव्यू। प्रेजेंट। यस बेटा। आयुषी, who is Ayushi Mehta? Ma'am, it is Lakshmi Mehta. Lakshmi Mehta. Ma'am, my name is Lakshmi Mehta. Yes, Laksh. Ayushman, Ma'am, Ayushman present. Bhavya, Dhruv, Ma'am, is present. Rishita, Rishita present, ma'am. Hitanshi, Ma'am, Bhavya Singh is present. Manasvi, Present. Ma'am, Divyanshi present. Ma'am, Hitanshi is present. yes, बेटा। निश्चय, Present, ma'am. पराग, Present, ma'am. Kriti, Rizvi Jati present, ma'am. I can leave the meeting. yes, you can. Ritika, Rudransh,
Bye, ma'am. Rudransh, Ma'am, have a nice day. You also, beta. Bye, ma'am. Tanisha, Rach. Unnati, bye, ma'am. Yesh Gupta. Bye, ma'am. Yes, Yukti. Ma'am, you're beautiful. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. You Have a also, nice beta. day. Have a nice day. Ma'am, Yukti present. Yes, Yukti, I mark your presence.